IT. So I'm writing electrical energy as VIT. So I'm just specifying this part because it's a very important formula. Electrical energy supplied. Electrical energy supplied. Formula for this. Next part. We have just written it over there as E is equal to VIT. So, as E is equal to, that is an electrical energy supplied, is equal to VIT, where, just writing for you, where V is equal to IR. So, we can write it like this way. In place of V, I'm going to write I, R times I times T. So electrical energy is equal to I square R T. Now, this is the formula of electrical energy through any, which is dissipated across any electrical component, because the resistance is also given in this formula. So I'm writing this formula as E is equal to I square RT. Another formula that I can write is where I can be written as V over R. Therefore, we can also write this way. Energy is equal to V over R square RT. So energy is equal to V square over R square RT. I'm going to cancel out variables which can be cancelled. So R can be cancelled out. So we are left with energy is equal to V square over RT. Now we have two formulae over here. One is this one, and the other one is this one. And both these formulae they can be used to determine electrical energy dissipated. Electrical energy dissipated in any electrical component. So these two formulae are used for electrical energy dissipation. Now, it doesn't mean that these two formulae cannot be used apart from this concept of dissipation. For example, if you are given with resistance of a resistor, of a component, you are given with potential difference, and you are given with the time for which the circuit is kept switched on. फिर से बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे फॉर्मूले यूज कहाँ होने हैं. So first of all, I'll bring these formulae at one place so that you can see it on one side. Today I've given you three formulae.
which are mentioned as important formulae in practical electricity. Pehla formula I've given you for electrical energy supplied, which I've written as VIT. How are you going to solve for this formula? How are you going to get questions based on this formula? You'll be given a circuit. In that circuit, you will be given the potential difference across that circuit. And at the same time, you are given the current flowing through that circuit. And for the time, you have switched on the circuit. So that means that you have potential difference in that circuit or across any particular component. You have current flowing through that component, and you have a time for which current is flowing through that component, and you have supplied the potential difference across that component. And I'll ask you as an examiner that can you determine the electrical energy supplied to this electrical component? So what you're going to do, you're going to use the formula E is equal to VIT. Now you have the value of V, you have the magnitude of current, you have the magnitude of time. You'll substitute these values and you will find out the current supplied to this electrical component. But if I ask you, is it necessary that whatever electrical energy we have supplied to that electrical component, all of it is being used, or a part of it is being used, or a fraction of it is being used? जरूरी तो नहीं है ना कि मैंने अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 20 जूल्स की सप्लाई की थी किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, तो उसने 20 के 20 जूल्स को ही कन्वर्ट कर दिया, यानी डिसिपेट कर दिया. Conversion of electrical energy to non-electrical energy is dissipation of electrical energy. So it's not necessary कि हम जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी कंपोनेंट को सप्लाई करते हैं वो सब एनर्जी को यूटिलाइज करके कन्वर्ट कर देता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक और भी तरीका हो सकता था कि it has only converted 30% or 40% of that energy to non-electrical energy and the rest of the energy is not being consumed. It all depends. So now, how I'm going to work out for that? That is called energy dissipation. Instead of calculating energy supplied to an electrical component, I'll calculate energy dissipation across that electrical component. Now, how we can calculate electrical energy dissipation? Electrical energy dissipation का मतलब है कि how much energy is being converted from electrical to non-electrical in this component. Now, how I'm going to determine that? If I have the resistance of that component, I have the potential difference across that component, and I have the time for which energy is being converted to non-electrical forms. So, मैं formula use कर सकता हूँ that V square over R T. It will give me the energy dissipation. Or if I have a current flowing through that circuit, through that electrical component, and the resistance of that component and the time, then I can again use the formula to determine electrical energy dissipation. Now, there is no hard and fast rule that आप VIT वाला formula use नहीं कर सकते. Like for example, if I'm talking about the components which convert all the electrical energy supplied to them to non-electrical energies, it means that the electrical energy supplied to them is equal to electrical energy dissipated in them. Are you getting my point? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सप्लाई की है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिसिपेट हुई है वो सेम है. तो क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. बेटे, I'm giving you time. क्या आप मेरे से इस पूरे फॉर्मूला के ऊपर कुछ पूछ लें, क्योंकि मैं फिर से इसे वापस लेके जाने वाला हूं. अगर आपको मैं पहले से बताना चाहूं कि मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं लिंक्स डेवलप कर रहा हूं. इन द फर्स्ट प्लेस I have developed the link where we have studied this section. ठीक है, फिर हमारे पास से फॉर्मूला वाला सेक्शन आ गया, फिर मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर वाला सेक्शन दिया. So basically आप सोच रहे होंगे कि how we are moving on to this section. देखो, मैं पहले यहाँ से शुरू हुआ. In this section, I'm discussing one component, that is transformer. To discuss transformer, I have come on to the discussion of this formula because I know that when we'll discuss transformer, most of the students they get confused over this concept that how we are saying the potential difference increase will decrease the current, though
Ohm's law says that the increase in potential difference across an electrical component will increase the current flowing through it. So I'm still obeying that law. I'm not denying that. I'll discuss back to that law. But before that, we need to understand all these formula and how and where to apply them. Ji bachcho. I'm expecting some answer, some replies, some responses, positive or negative, whatever. But at least tell me that have you understood? Have you understood? Yes, sir. Every one of you, I want a big yes. Or if there is no, please let me know. Yes, शाबाश. Yes, सर sir. हमने 3 Yes. फॉर्मूला तो याद रखने हैं अभी तो. हाँ जी, इसके साथ 3 और लिखने लगा मैं. लो. लेकिन वो आसान है. ये भी आसान ही है, कोई मुश्किल तो नहीं है. तो 3 फॉर्मूले हैं, तो मैंने आपको शो किया कैसे डिराइव होते हैं. लोग वो भी आसान ही है. Any other question बेटे? You're most welcome, please. Go ahead. सर वो E is equal to V over R square RT वाला बता दें. E is equal to V square over RT वाला. यही वाला कह रहे हो ना? लास्ट Yes. वाला. देखो बेटे, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था ना, E is equal to I square RT. सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड फॉर्मूला देखो. जी सर देखा. अब I का मतलब क्या होता है? I मैंने लिखा है I is equal to V square over R. जी. So when I'm saying that I is equal to V square over R, so I can substitute the value of I as V square over R in place of I square. ठीक है सर. Then I तो have आपने v और r लिखा हुआ, v स्क्वायर नहीं लिखा हुआ. किधर? उसके साथ where I is equal to v over r लिखा हुआ आपने. So बेटे V over R लिखा है ना, लेकिन फॉर्मूला में हमारे पास E is equal to I square था. ठीक सर ठीक. तो उसकी जगह मुझे V over R जब लिखना है तो उसका होल स्क्वायर भी तो होगा ना. ठीक सर. और बेटे क्वेश्चन? नहीं सर. ओके. बस आपसे मैंने अब सामने पावर के फॉर्मूले लिखने हैं. Okay, so एक मिनट. सर ये जो E is equal to VIT है, इसके अंदर हम VI की जगह पावर लिख सकते हैं? जी बेटे, बिल्कुल वही तो करने जा रहा हूं मैं. अब मैं आपको शो करने लगा हूं कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास कैसे आता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म. So that's why I'm linking it to the corresponding formula for better understanding. Okay, in the first phase, what I'm going to do, I'm writing the formula of power. So according to what we have studied in physics, power is work done over time. That is rate of work done. Oh, power is energy over time. So if I'm talking about this, so we are talking about electrical energy. So electrical energy is VIT over time, which means that I can cancel this part, this T and this T. So what I'm left with as power is equal to VI. So this is a formula of electrical power supplied. So I'm showing you the formula of electrical power supplied.
ठीक है. Next step पे अगर हम आते हैं, electrical power dissipated. In the similar manner, I'm going to solve this part. So power is equal to VI की जगह I'm going to write electrical power dissipated के लिए फिर से हम electrical energy dissipated over time, which can be written as power. So electrical energy dissipated ka we have determined the formula as I square RT over T. Again cancelling it, T and T. I'm left with power is equal to I square R. So electrical power dissipated can be calculated using this formula. So this is the formula that we have to write over. Electrical power dissipation. Now, next step, we have this part. Power is equal to V square over R T divided by T. So power is equal to, again, I'm cancelling out this part. Finally, I got the answer as V square power is equal to V square over R. So these are the formulae for electrical power dissipated. Both the formulae that I'm showing you, I square R and V square over R, and that's a formula of electrical energy dissipated. Now, I'm zooming it. Okay, अब मैं इसको zoom out कर रहा हूँ. If you want to capture the image of these formulae, please do it right now. जल्दी से capture the image of this. And please, those who are capturing the image, please, if you can post it, upload it in the WhatsApp group, I'll be very thankful to you. Just one candidate get that responsibility of getting the screenshots and sending in the group so that if anyone misses out, उसके पास at least notes यहाँ पे available हों उससे पहले. Okay, अब मैंने ये formula आपको बताया. इसके accordingly हम power या energy को relate कर सकते हैं power supplied को, that it is VI. So electrical power supplied is VI. Electrical power dissipated is I square R or V square R. Now coming back to this point of transformer. I mentioned this thing in a transformer that electrical power supplied to primary coil is always equal to electrical power supplied by the secondary coil, which means that energy is not created. I'm repeating my part. इसका मतलब ये है कि energy create नहीं हो रही है. Reason क्या है कि जिस 1 second में जितनी energy हम electrical energy supply कर रहे हैं to the primary coil, the same electrical energy is supplied by the secondary coil. So within same time interval, the energy that we are supplying, because power is energy over time, that how much energy is there in 1 second. So as per that relationship, we can simply say over here
that whatever energy I'm supplying to the primary coil in 1 second, the same energy is supplied by the secondary coil in the same energy supplied in the secondary coil in the same time interval, which means that we are obeying principle of conservation of energy. We are not saying that energy can be produced. So we are with that rule over here as well. Now, जी बेटे, सर एक क्वेश्चन है सर, पूछो। हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इस केस के अंदर? बेटे मैं अभी आपको वही चीज समझाने लगा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग बातें समझानी है इसमें। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करके चलता हूँ। अगर आप पहले बता दो, बुक्स जब आप लोग रीड करेंगे ना, सो बुक्स का सीक्वेंस डिफरेंट है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दीज पार्ट्स। मैं कभी कहीं से कोई पार्ट उठाता हूँ, कभी कहीं से कोई पार्ट उठाता हूँ, उसे एक जगह पे लेकर आके जिनके कनेक्शन उन्हें ज्वाइन कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस वाली बात मैं भी कर ही नहीं रहा। अभी मैं आपको आपका जवाब बाय द एंड आपको खुद ही मिल जाने वाला है कि मैं आपको क्यों इतना स्पेसिफिक इधर से उधर लेके मूव कर रहा। जस्ट गिव मी 3 to 4 more minutes और आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखें, लेट्स से कि मैंने इस साइड पर जो वोल्टेज रखा था, अज्यूम कर देते हैं कि वो था मेरे पास 10 वोल्ट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट का 10 वोल्ट्स मैंने दिए थे, ठीक है। और उस वक्त इस साइड पे जो करंट है ये वोल्टेज था, और जो करंट इस साइड पे चल रहा था वो करंट अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास था 100 amperes. I know that with 10 volts it's not that easy to get 100 amperes, so let's consider 800 amperes हमारे पास करंट था। अब मैंने इस साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया जो मुझे यहां से हासिल हो रहा था वोल्टेज, और वो मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पर हम इस तरह लगा लेते हैं, सबसे पहले ना छोटे से काम करते हैं, इसे मिटा दें। I'll connect resistor over here. ये मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, and I'm connecting across this load इस लोड के अक्रॉस मैं यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा, और इस पॉइंट पर एक एमीटर लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एमीटर लगा दिया और इस तरफ मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर। ओके, अब जब मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर्स कनेक्ट किए, तो इस साइड पे मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज, लेट्स कंसीडर इट एज 200 वोल्ट्स। अब देखें कहां पे मेरे पास था 10 वोल्ट्स और उसे मैंने इंक्रीज कर दिया 200 वोल्ट्स पे। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, अगर मैंने इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड की बात करता हूं और वो मेरे पास यहाँ पे आती है VI, ऐसे ही करेंगे ना हम। सो जो इलेक्ट्रिकल पावर ये सप्लाई कर रहा है वो भी हमारे पास VI होगी। बस फर्क क्या होगा कि इधर आई कैन राइट VP IP, दैट्स अ प्राइमरी कॉइल वोल्टेज, और इधर आई एम गोना राइट VS IS, that is the secondary coil voltage and current. Now, if I have this value over here, which is 10 times 100, so answer comes out to be 1000. So that means that power is 1000 watt. Now, on this side, compared to that, rather I'll make it 500 की बजाय मैं इसे 5000 कर लेता हूँ. So I'll increase it to 5000 volts. ठीक है? When I've increased it to 5000 volts, what should be my answer over here? 0.2 amperes. Am I right? जब मैंने उधर 5000 volts लिखा है, so हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा?
0.2 एम्पेयर्स। सो यहाँ पर हमारे पास अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 वोल्ट। देखो पावर में कोई इंपैक्ट नहीं आया। किस चीज में इंपैक्ट आया? इंपैक्ट आया हमारे पास वोल्टेज में और करंट में। मैंने वहां पे 200 लिखने की बजाय यहाँ पे मैंने 5000 लिख दिया। प्रेज्यूम करें मेरे पास 5000 वोल्ट आ गए, तो करंट देखो कितना रिड्यूस हो गया, 0.2 एम्पेयर। अब ये जरा एक पॉइंट समझना आपने। हाँ बेटे कुछ पूछ रहे हैं आप? डाउट? I can't hear you at all. If you can write, text me. Chat में text कर दो। अच्छा 0.2 कहाँ से 5000 हम लोगों को पहले से गिवन था। बेटे अभी मैं assume कर रहा हूँ कि जो मैंने components लगाए हैं उन्होंने मुझे values बता दी। ठीक है? Right now what I'm assuming कि जो मैंने components यहाँ पे connect किया ना, उससे मुझे values actually में बता दी है। ओके ठीक है। सो मैं ये गिवन नहीं है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपसे बात कर रहा हूं कि ये कंपोनेंट्स है, मुझे इनकी वैल्यूज के बारे में बता दी है, तो उसकी बेसिस पे मैं चल रहा हूं। बेटे आई थिंक व्हाट्स द टाइम? स्टिल वी हैव 2 मिनट्स। अच्छा अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये हमेशा रूल रहेगा ट्रांसफार्मर का कि जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है उतनी ही उधर आएगी। उसके ही चक्कर में हमारे पास वोल्टेज और करंट के कॉम्बिनेशंस इंक्रीज होते हैं या चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। अब आते हैं ओम्स लॉ वाली बात पे, जो आपने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पूछा था। बेटे एक बात आपको बता देता हूं, इस प्राइमरी कॉइल पर और इस सेकेंडरी कॉइल पर अभी भी वो रूल वैसे ही अप्लाई होता है जैसे ओम्स लॉ में था। उस रूल को समझते हैं। अगर मैंने यहां से इस 10 वोल्ट्स को इंक्रीज कर दिया होता टू 20 वोल्ट्स, अगर मैं इसको इंक्रीज करके ले जाता हूं 20 वोल्ट्स पर, तो यहां पर अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा तो करंट हो जाएगा 200 एम्पेयर। याद रखना। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता 40 वोल्ट्स पर, तो यहां से करंट जो होता वो हो जाता हमारे पास 400 एम्पेयर। यानी कि एक कॉइल में रहते हुए वी कैन से कि हमारे पास ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है। मैं जितना ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं करंट उतना ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब हम दूसरे कॉइल में जाते हैं तो आप लोग पता है क्या कंफ्यूज कर देते हैं? when we talk about this transformer stuff, you confuse it, the primary coil with the secondary coil, as one single thing. They are not one single thing. They are two different entities. Current cannot flow directly from primary coil to the secondary coil. There is something else behind this phenomena, this mechanism, which I'm going to teach you in magnetism and electromagnetism. But over here, you just remember that primary coil and the secondary coil, these are two different entities. So no current is flowing to the secondary coil through the primary coil. So we can apply individually Ohm's law on the primary coil, considering that increasing the voltage will increase the current, or decreasing the voltage will decrease the current in the primary coil. Now in the secondary coil, we are comparing the potential difference and this part. So according to that comparison, it can be done. So मैं उस comparison की basis पर आपको ये बात बता रहा था कि अगर एक का potential difference ज्यादा होगा तो उसका current का combination कम होगा, क्योंकि दूसरे का अगर potential difference कम हो गया तो current ज्यादा होना चाहिए ताकि power same maintain रहे। अब यही चीज यहाँ पर भी हो सकती है। Suppose करो कि अगर मैं यहाँ पर आपसे कह देता हूँ ना कि ये voltage हमारे पास हो जाते 2500 volts, तो फिर इधर क्या हो जाता हमारे पास? करंट इन दैट केस हो जाता 0.1 एम्पेयर। यानी कि इंडिविजुअल एंटिटी में सेकेंडरी कॉइल में भी ओहम्स लॉ एज इट इज ही ओबे हो रहा है जैसे होना चाहिए। तो ये जो हम देख रहे हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वेरिएशंस है, वो एक दूसरे को कैसे इंपैक्ट कर रही है, वो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं। ठीक है बेटे? गुड फॉर टुडे? Yes, sir. एक चलन थर्सडे। जी बेटे
बोले बोले ईमान। सर कुछ नहीं सर, वो माइक ऑन हुआ है। अच्छा, सो थर्सडे को इंशाल्लाह हम ये सारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। जस्ट वन मोर क्लास जिसमें ये खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद मैं 1 से 2 दिन आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करवा के देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। इज इट क्लियर? सर जी बच्चे पूछे। सर इलेक्ट्रिक इसका पावर image- एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है? बेटे पावर होती है कि 1 सेकंड में हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, 1 सेकंड में कितनी डिसिपेट हो रही है। पावर हम बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितनी वर्क डन हो रहा है, कितनी एनर्जी यूज हो रही है, या कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है। और एनर्जी होती है वर्क डन के लिए जो हमें चाहिए होता है काम करने के लिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को उसे एनर्जी कहते हैं। पावर ये बताता है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी मिली है। एनर्जी डायरेक्टली खुद वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है। ठीक सर। ठीक है बेटे, इसका स्क्रीन इमेज कैप्चर कर लिया सबने? ओके गाइस, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट